Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hey, this is Aruba Fak and you're watching my channel. Today, here's on your biggest request. I'm giving you 10 tips and 3 bonus tips to learn faster. Mastering a new concept takes time and dedications, but don't you wish there was an easier way to get the hang of it? While cramming, the subject does not work in the long term. Following good and effective learning practice help you pick it up a little quicker. We will start with strategies for studying and reviewing concepts and move on to some lifestyle changes you can make so you remember things better. Before starting the video, please press the subscribe button and a bell icon next to it and put a comment in a comment section box with the hashtag of ArubaFak. If you like the video, please thumbs up and let's start. Further ado, go straight on the video. How to learn faster and quicker. Let's go on the tip. The first one is take handwritten notes. You are more likely to remember something you have written down. If you are in class, listen carefully to the lecture and jot down the keywords and phrases you hear. If you are learning something online or from a book, rewrite what you read in your own words since that can help ingrain it better in your memory. That way, you will be able to recall it more quickly. For example, if you're trying to learn more about Pakistan history and or US history, you could write down a timeline of all the important dates and events. Give your full attention to your studies while you are note taking so you don't miss any crucial information. Right after you take them, go through your notes and organize them in a more structured way so they are easier to review. इन दिस स्टेप मैंने आपको ये बताया कि अगर हम हैंड राइटिंग नोट्स पहले से लिख लें और जब हम पढ़ लें पूरी चीज़ अच्छे से सुनने के बाद हम अपने वर्ड्स में ओन वर्ड्स में लिख लेते हैं तो उसको रिवाइज़ करने में भी इजी रहता है और वो उस टाइम हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में पहले से सारे इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स वगैरह लिख लें और उसको समझने के बाद जब हम उसको एक बार ओवर रिव्यू करेंगे तो इससे हमें याद करने में बहुत आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल रिटर्न में लिख रही हूँ, जिसको मेरी आवाज़ समझ में ना आए वो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा।
So our first tip is take handwritten notes. अगर हम अगर हम हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे तो हमें याद करने में बहुत आसानी रहेगी. Our second tip is say it out loud. Say it out loud. Hopefully आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ आ रही होगी. Say it out loud का मतलब है कि जो भी आप पढ़ें बहुत तेज़ पढ़ें, इतना तेज़, इतना लाउड कि आपको अपनी आवाज़ खुद सुनाई दे. Hearing yourself repeat the information helps you remember it easier. Read aloud if you are studying from a book, website, or your notes, or your teacher lectures. Go slowly through the text so you don't skip over anything important. Try pointing at the words as you read them to help you commit them to go memory even more. The more you say the information out loud, the easier it gets to pull it off the top of your head. Read aloud if you try to studying. Learn studying. For example, if you are trying to learn a new language, if you're trying to learn a new language, practice saying vocab words and sentences as you learn them. Since you are actively speaking, the information stands out better in your long term memory. जितनी तेज़ आप पढ़ेंगे आपके कानों में जब तक आपको आवाज़ नहीं जाएगी तब तक आपको याद नहीं होगा. और अगर आपने लाउडली अपने लेसन को याद किया तो आपके दिमाग में हमेशा ये याद रहेगा. ये लेसन आप फिर कभी नहीं भूल सकते. नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कि नोट्स रेडी करके सब लेसन को सुनने के बाद अपने ओन वर्ड्स में रेडी करने चाहिए. इससे हमारे पास दिमाग में काफ़ी अरसे तक चीज़ रहती है. उसके बाद जब सेकंड हमने पढ़ा कि हमें लाउडली पढ़ना चाहिए. इससे हमें जल्द याद होता है और हमें देर तक याद रहता है. थर्ड वन इज़ ट्राई सेल्फ टेस्टिंग. ट्राई सेल्फ टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? ट्राई सेल्फ टेस्टिंग का मतलब आप याद करने के बाद जब जो भी चीज़ आप याद कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेक्स्ट बुक से एक चैप्टर याद कर रहे हैं, तो वो याद करने के बाद आपने उस चीज़ का खुद से क्विज़ या टेस्ट लेना है. इस तरह से आपको अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो जाएगा और अगर कोई लाइन आप बीच में से फॉरगेट करते हैं तो वो लाइन आपको हमेशा याद रहेगी. अपना खुद से काम चेक करने से अपनी गलतियाँ रिमेंबर भी होती हैं. खुद टेस्ट लें, अपनी खुद प्रैक्टिस करें. Quiz yourself so you see what topics you still need to review after you have read through or practiced something.
Test your memory by reciting everything you just learned. If you need to remember keywords or phrases, try writing down their definitions without looking them up. Make note of what you have trouble remembering so you can go back and practice it somewhere. That way, you are not wasting time focusing on things you already know well. For example, if you testing if you are testing yourself on a textbook's chapter, summarize everything that happened in your own words. Then check for any keyword at the end of the chapter and try to define them. You can also find many practice tests online for the subject you are studying. अपने खुद से टेस्ट लेने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा जिससे आप टेस्ट देने से कभी घबराएंगे भी नहीं. You can also find many practice tests online for the subject you are studying. बहुत सारे टेस्ट ऑनलाइन भी मौजूद होते हैं. आप इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा. Our fourth one is teach the information to someone else. एक कहावत है कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से आता है. ये कहावत इसी टिप से मिलती है. अगर आप पढ़ेंगे, याद करेंगे या समझेंगे कोई चीज़, उसके बाद किसी और को वो चीज़ एक्सप्लेन करने से आपको वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी. कुछ बच्चे होते हैं जिनसे मैं इवन ये भी बोलती हूँ कि जाओ इसका डिक्टेशन लो या इससे ये चीज़ पूछो या उसको समझाओ. तो वो इसी रीज़न के तहत होता है ताकि वो चीज़ उसको उससे ज़्यादा आ जाए. खुद चीज़ सिखाने से जल्दी आ जाती हैं. टीच द इंफॉर्मेशन टू समवन. Explaining some things help you retain the main point. Have one of your friends listen to you as you try to teach them the subject you have been learning. किसी भी ज़रूरी नहीं आप किसी बच्चे को समझाओ. किसी भी अपने फ्रेंड वगैरह के सर्कल में भी आप वो समझा सकते हैं. इस तरीके से आपको वो पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएंगे. Try to tell them everything you know in a clear and direct way so you don't confuse them. Try to tell them everything you know in a clear and direct way so you don't confuse them. Ask them if they understand or if they need a better explanation. If you have trouble remembering central point, make sure you go back to review them as well. Since you have to actively recall the information you are teaching, it's easier for you to learn the subject more quickly. For example, if you are learning about chemistry, try teaching someone about the periodic table and how the chemicals bonds. If you have anyone to help get out you out trying writing out the instructions or information you just learned,
Use simple language so anyone who read it can understand it. 5 is use memory device. Combine letters and nonsense sentences to remember complex topics. If you have to memorize a list of information or a more abstract concept, abbreviate the first letter of each term. You can also try making a funny sentences that's easier to remember. Since you are associating visual and images with the concept, you will have an easier time remembering. Since you only have to remember shorter phrases, you won't spend as much time on the difficult subject. For example, if you are learning music you and want to learn the notes on the treble clef, you may use the sentence every good boy deserves fudge to remember the notes E, G, B, D and F. The next part will be come on tomorrow. आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह पार्ट 2 मैं कल पोस्ट करूँगी। इतने के लिए आपको इतना समझना ज़रूरी है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में इंशाल्लाह आई विल बैक इनटू अदर वीडियो ऑफ पार्ट 2। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।